Assalamu alaikum, Shagufta and Shahzad. So again, we don't have a lot of people here, so I'm just going to wait for a couple of minutes. Assalamu alaikum, Shahzad. आपने भी join कर लिया. So I just wanted to ask if you have any idea why we have such a low turnout now. Any specific reasons that you can think of? जी सर, वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं सका। इतने कम लोग क्यों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं अब? ग्रेजुअली जो है वो अटेंडेंस काफी कम होती जा रही है। आपका क्या ख्याल है कि क्या रीजन हो सकती है इसकी? सर आई डोंट नो, मे बी टाइमिंग की वजह हो सकती है। कोर्स काफी लंबा तो नहीं हो गया? नहीं सर। चलें, let's wait for just 1 or 2 more minutes and then we'll start. सर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस 2.1 की जो है स्नैपशॉट व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर की है। मैंने देखी है। ये सेकंड से है डॉक्यूमेंट जो मैंने रात सेंड किया था। जी जी सर, 2.1। ओके, ठीक है। All right, let's start. I'm going to share my screen. So we're done with this part. This is what's needed. All right, so I hope all of you can see my screen now. Okay, मेरी screen नजर आ रही है आप सबको? Okay, yeah, the course is getting a bit more complicated, but this was actually the most important part of the course. So this is, if you actually
work practically after this, and you have to use some data sets and you have to analyze some data sets later on. This week and the next week are probably the most important parts of the course. इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की learning होनी थी, but the turnout is so low at this point. Okay, we'll have the recordings available, but still that's not the same thing. Anyway, let's start. So in this case, you had 3 data sets given. So you've got this Chapli Kebab data set, you've got this KKBL data set, you've got this Elecmart data set. ठीक है, एक और data set आपके यहाँ पे add हो गया, that's this Chapli Kebab. So this is basically some sort of a startup or a new restaurant जिन्होंने अभी जो है launch किया है या launch कर रहे हैं. And what they're trying to do is they're trying to do a survey before the launch and trying to understand their target market a bit better. So in a survey design here, and they've asked people different types of questions. Or iski basis पर they will be able to make some decisions about their own business. So you can see there are different variables in that in this data set जो उस पे based है जो उन्होंने questions किए थे लोगों से. So every row in the data represents one respondent. So every row represents one person. So उसकी age आ रही है, weight आ रहा है, income, job type, and similarly you've got some other variables after that as well. आप filters ये जो drop down है यहाँ पे drop downs पे click करके you can have a look कि हर variable के अंदर आपके पास क्या possible values हो सकती है. ठीक है, for example neighborhood जो है neighborhood के अंदर we've got 3 possible values. जो survey किया गया है, this survey was only done with residents with people living in these 3 areas. That's DHA, Gilbert, and Marlton. Achha. So let's go back to the PDF and let's go to the PDF and have a look at the exercises that you've got available in this part. So हमने last time जो है we've done one we've completed the exercises given in the first PDF already. So we've covered a lot of ground as far as some basic concepts related to pivot tables and pivot charts are concerned. This document is relatively more advanced, and you're going to be able to do much more detailed things using the options that we have in this document. So let's start with this. So सबसे पहले उसने एक जो है एक practice exercise दी हुई है. Let's try and see if we're able to attempt this. So we'll try and see how far we can go on this today. Otherwise, the rest we can continue with in our next session. Okay, so let's start with this. First of all, let's say what we have to do is we have to look at this data that I just showed you, that was the Desi Savi Chapli Kebab data. Isme you want to have the neighborhoods in the rows. So by neighborhood, aapko kya karna hai? You want to see whether what is the distribution of these people who have responded to a question as no or yes. So what was that question? The question was whether they have tried chapli kebabs before or not. Okay, so that's a no or a yes. Right, so let's try this. Let's start with this. So आप किस तरह क्या करेंगे इसके अंदर? First step क्या होता है? The first step is you make a pivot table. So you select the whole table. So आपने select कर लिया. You click on the insert tab. You click on pivot table here. You can
create the pivot table in a new worksheet. आप a new worksheet बना लें. You can rename this to be able to locate it later. So now you've got this pivot table. So आपको rows के अंदर क्या चाहिए? What you want to do is you want to have a look at how people have responded to the last question based on their neighborhood. ठीक है? So आपके पास क्या options आ रही हैं? You've got defense, Gulberg, and model town. और neighborhood variable कौन सा है? That's this second last variable here. आप क्या करेंगे? Neighborhood को उठा के आप rows में डाल देंगे. इसी तरह से have tried variable जो है उसमें आपको क्या count करना है? The number of people in that in each of these categories. लेकिन आपको have tried variable कहाँ पे डालना है? Columns के अंदर डालना है. Because rows के अंदर neighborhood आ गया. ये देखें values की rows के अंदर आ रही हैं. Columns के अंदर क्या values आ रही हैं? You've got whether they have tried those supply kebabs before or not. So ये आपने columns के अंदर डाल दिया. And then now the thing is यहाँ पे आपको देखना है, सोचना है कि आपने values के अंदर क्या डालना है. Right? So values के अंदर essentially what you want to do is you want to count the number of rows. अगर आप ये data देखें, every row represents one person. So अगर आप row को count करेंगे, that would be the count of the number of people in a sense as well. तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई requirement होती है, हमने पहले भी discuss किया है, आप कोई ऐसा variable choose करते हैं that is unique in this data and it does not have any missing value. So missing value ना होना is very important. So अगर missing value होगी तो फिर वो आपकी count जो है वो गलत हो सकती है. तो आपको ensure करना है that you choose a variable to count that does not have a missing value in the data. So वो generally क्या होगा? आपका कोई भी ID variable जो होता है ना आपके data के अंदर, that's generally something that does not have a missing value. So in this case, ये जो first column है आपका जिसके अंदर values आ रही है 1 से लेकर onward 856 तक, this variable is an ID variable. ये आपका जो person ID है एक तरह से. This cannot be missing in the data. So आप इसको use कर सकते हैं to count the number of people in each of these categories. तो आप क्या करेंगे? आप उस वेरिएबल को वहां से उठाएंगे. So you go back to the pivot table. आप person वेरिएबल को चूज करेंगे. Now even though it's not a value itself, as in ये मतलब ID वेरिएबल है, इसमें numbers की इतनी कोई सेंस नहीं है, सेंस नहीं बनती, लेकिन आप इसको यूज करें बिकॉज इसके मिसिंग वैल्यूज नहीं है. सब यहाँ से उसको उठाया आपने अपने वैल्यूज में डाल दिया. इंस्टेड ऑफ सम ऑफ पर्सन्स आप यहाँ पे काउंट ऑफ पर्सन यूज करेंगे. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई you cannot use sum of persons here? Shahzad, Shagufta, ये as it is क्यों नहीं रहने दे सकते आप? सर सम जो है उसको प्लस कर देगा और जो काउंट है वो उसे काउंट ही करेगा, जितनी रोज है उनको काउंट करके वो बताएगा. तो सम ऐड अप कर देगा. हाँ, ये सम ऐड अप कर रहा है, लेकिन ऐड अप करने से हमें क्या मिल रहा है? ये जो यहाँ पे ये हमारे पास नंबर्स आए हैं, इनका क्या मतलब है? सर ये ग्रैंड टोटल है. सबने ट्राई तो नहीं किया होगा सर्वे में जो है. नहीं, ये जो वैल्यूज आ रही है आपके पास, ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यहाँ भी सम ऑफ पर्संस आ रहे हैं ना. आपके पास टोटल लोग कितने थे पहले? यहाँ पे टोटल लोग तो आपके पास थे टोटल 856. ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं? इनका क्या मतलब है? एनी आइडिया? देखिए जो पर्सन वेरिएबल है ना, इसके अंदर देखें नंबर्स आ रहे हैं नीचे 1 2 3 4 5 6. नाउ if somebody
has a number assigned 10 or if somebody else has a number assigned 1, इस number की as such कोई significance नहीं है, बस ये इनको एक ID assign किया हुआ है, right? तो ये यहाँ पे जो values हैं ये क्या कर रही हैं, sum of person में क्या हो रहा है, ये इन सब को ऐड कर रहा है basically, ये 1 2 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on, all of these values are being added. So for example, यहाँ पे डिफेंस और नो वाला जो ये वाली वैल्यू, ये वाला जो नंबर है, व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि डिफेंस नेबरहुड में जिन लोगों ने नो सेलेक्ट किया है, उनके जो पर्सन आईडी हैं, सब पर्सन आईडीज हैं सबके, उन आईडीज को यहाँ पे सबको उसने ऐड कर दिया, which does not really have any practical meaning. ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है. So that's why it doesn't make any sense to use sum of person here. आपको काउंट करना है लोगों का, कितने लोग जो हैं आपके पास इसका हर कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको जाके चेंज करेंगे, to right click, then summarize values by, you to select count there. Now this makes sense. अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल भी आपके पास 856 आ रहे हैं, that's the total number of people that you actually have in the data. So now this makes sense. ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है फ्रॉम ईच नेबरहुड, कितने लोगों ने यस सेलेक्ट किया, कितने लोगों ने नो सेलेक्ट किया. Okay, now let's try another one. So let's try this crosstab. ठीक है, so अब आपको क्या करना है, you want to do this cross tabulation where you have number of persons who are male and female by live alone. ठीक है, आपको ये क्रॉस टैबुलेशन करनी है. सो क्रॉस टैबुलेशन का क्या मतलब होता है, जी मुझे बताएं. I think we don't have many people today, so it will be good to have to make it a bit more interactive, ताकि आप लोग भी थोड़े से ज़्यादा involved हो. सिर्फ सुनने का तो फायदा नहीं है ना, you should be able to understand what we're doing at every point as well. So cross tabulation हमने देखे पहले भी 2 दिन से कर रहे हैं. So what does cross tabulation mean? Remember एक आपके पास सर कंपैरिजन करना सर, कंपैरिजन करना, लेकिन इसमें पिवट टेबल्स के अंदर एक स्पेसिफिक तरह ये टर्म यूज होती है. एक आपके पास ब्रेकअप एनालिसिस होता है और एक आपके पास क्रॉस टैबुलेशन होती है. क्रॉस टैबुलेशन का क्या मतलब होता है? So cross tabulation में you basically have some variables in the rows and one variable in columns. तो कुछ rows में variable होगा, कुछ जो है वो columns में होंगे, तो फिर उन दोनों का एक matrix type जो है वो आपको output मिलती है. That's called cross tabulation. So यहाँ पे आपको cross tabulation किसकी करनी है? Number of persons who are male and females, gender by the live alone variable. तो आपको ये 2 variables चाहिए, ठीक है, और उनमें आपको counts चाहिए. So let's try this. So you go back to the Excel file there. Now मैं इसके copy कर लेता हूँ for now. Make another pivot table here. So what I want is I want gender by live alone. और इसी तरह आपको मुझे count of persons चाहिए वहाँ पे भी, ठीक है. So this is what I get in this case. So I've got gender on one axis. मैं ऊपर भी यहाँ पे change कर सकता हूँ. This is neighborhood. This is half tried. Similarly here we've got half tried, and here we have gender. So this is a cross tabulation of gender and whether they have
अच्छा सर यहाँ पे have tried नहीं था, यहाँ पे it was live alone. Yeah. So by gender we've got this information कि females में how many females live alone and how many females do not live alone, how many males live alone and how many males do not live alone. तो ये आपने उसकी क्रॉस टैबुलेशन कर लिया. ठीक है, is this clear? Is no problem? Acha, so for now you're getting just actual numbers here. आप इसको हमने पहले भी देखा हुआ, you can also convert it to percentages. So for example, you could say, what is the percentage of what are these numbers as percentages, as a percentage of what you have in the column total as a percentage of what you have in the row total. So आप ये इस तरह से percentages भी कर सकते हैं. For example, आप ये कर सकते हैं कि out of all the people in defense who took part in the survey, what percentage selected yes there and what percentage selected no there. Similarly, for every neighborhood, आप अलग-अलग से percentages भी calculate कर सकते हैं. So what would be the way to do that? आप यहाँ पे right click करेंगे, show values as, and you could do, for example, percentage of row total. इसका क्या मतलब होएगा इस case के अंदर? Out of all the people in defense who took part in the survey, 20.7% said they had not tried that before, and 79% said they had tried it before, right? So it's a very huge percentage of yes responses. So the yes responses, the number of yes responses decreases in Gulberg. It becomes around 50 almost, and then for Model Town it decreases even further, जहाँ पे आपके no responses are around 66% and the yes responses are around 34%. ठीक है. Similarly, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे करें, for example, percentage of show values as percentage of row total, इस केस में करते हैं. इसका क्या मतलब होगा? Sorry about that. अगर आप इसको percentage of row total यहाँ पे करते हैं, so this basically means out of all females who took part in the survey, around 16.5% live alone, and out of all males who took part in the survey, around 17.25% live alone. So there doesn't seem to be a very significant difference between uh, uh, males and females as far as living alone is concerned. ठीक है, दोनों की percentages are almost the same. All right. Acha. Let's go back to the exercises. तो हमने ये करके देखा है पहले, ये जो show values as ये second part जो यहाँ पे है, we have already tried this. इसको row total में करें तो we can see what results we get. अच्छा, so we have already done this part. So for example, the first case है, so let me actually go back there and मैं यहाँ पे ना original case वहीं पे रहे. So in case you have to review it later on, you don't find it very difficult. So I've got the percentages here, or the first exercises thing, I can convert them back to no calculation. Okay, so these were the original numbers. And then if you convert them to percentages as a row total, this is what you get in that case. Okay? Acha. Now, अब उसने देखें ये भी कहा है कि convert that table to show percentage of yes triers divided across neighborhood. तो अब आपको क्या करना है, जिन लोगों ने yes select किया,
जिन्होंने यस आंसर किया, रेस्ट उनको आपने देखना है कि वो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप अक्रॉस नेबरहुड्स। तो एनी आइडियाज व्हाट वी कैन डू हियर? तो अभी देखें, अभी तो मैंने क्या किया, कि हम हर नेबरहुड को अलग अलग देख रहे हैं। I'll make a new table here. Let me know how we can convert this. In this case, what we have done is we are looking at each neighborhood first. ठीक है, हर नेबरहुड को देखते हैं और फिर उस नेबरहुड के अंदर देखते हैं how people are divided and with respect to being uh, with respect to responding yes and no across for every neighborhood separately. अब वो क्या कह रहे हैं कि out of all the people who selected yes, तो ये वाला कॉलम जो है जिन लोगों ने yes सेलेक्ट किया, उनको आपने शो करना है कि वो किस तरह से डिवाइडेड है अक्रॉस द डिफरेंट नेबरहुड्स। डज दैट मेक सेंस? इसमें क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज दिस सर व्यू इन अ वे? यस सगफ्ता। सर हम फिल्टर यूज करेंगे सर, उसमें सिलेक्ट ऑल में नो और यस की वजह से यस को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ओके इन सो सारे नेबरहुड्स में जिन्होंने यस किया वो show हो जाएगा। okay, so that could be the first step. So columns में यहाँ पे जो filter है, what we can do is we can filter out the no part. ठीक है, वो तो हमने निकाल दिया यहाँ पे। Okay, so वो हमने निकाल दिया, now we get something like this. तो आपको करना क्या है? Essentially you want a percentage of yes triers को आपने divide करना है across neighborhood. हमें चाहिए कि ये जो total number है yes triers का, how can you divide this number across these three localities? अब क्या कर सकते हैं? जी एनीवन? देखिए अभी हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, परसेंटेज ऑफ रोज किया था। यहाँ पे ये रोज का जो टोटल था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 100%। यहाँ पे अभी वही लगा हुआ है परसेंटेज ऑफ रोज, तो टोटल भी 100 है। ऑफ कोर्स एक ही वैल्यू है इस रो के अंदर, तो वो भी 100% है। बट इट डजंट मेक एनी सेंस, दिस टेबल इज नॉट यूजफुल एट ऑल। सारी 100% वैल्यूज आ रही हैं, इट डजंट really give you anything useful. So आप क्या करेंगे इस टोटल नंबर को अक्रॉस नेबरहुड्स डिवाइड करने के लिए? एनी आइडिया? सर मैंने ये एक्सरसाइज की थी सर, पर मेरा वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं सर। मैंने कॉलम में ही हैव ट्राइड प्लेस किया था और वैल्यूज में काउंट ऑफ वैल्यूज में सर मैंने काउंट ऑफ हैव ट्राइड यूज किया था, तो मेरा डाटा डिफरेंट आया सर। आपका टोटल ग्रैंड टोटल, आपका ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है यहाँ मैं पे? आपको बताती हूँ। सर डिफेंस का ग्रैंड टोटल 100% आ रहा है, गुलबर्ग का 36.27% आ रहा है और मॉडल टाउन का आ रहा है 31.53%। सर आपको आपने आवाज आ रही है? जी आपने कुछ कुछ डिफरेंट किया होगा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं रोज कॉलम्स। ये आपने या तो ये डिफरेंट किए होंगे या फिर आपने शो वैल्यूज है इसके अंदर कुछ और चूज कर लिया होगा इसके अंदर। बेसिकली आपको यहाँ पे सर मैंने वैल्यूज में काउंट ऑफ हैव ट्राइड को एंटर किया है सर। ओके, फिर और सर उसके बाद मैंने कॉलम लेबल्स में हैव ट्राइड को प्लेस किया है और रो लेबल्स में नेबरहुड को। ओके देन सर मेरा ये डाटा है 2.1 में 1B में। आपको मैं कह रहा हूँ आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे शो वैल्यूज एज के अंदर आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ? सर एक सेकंड।
आपने ये कुछ और सेलेक्ट किया होगा जिसकी सर वजह से परसेंटेज ऑफ सर। परसेंटेज ऑफ यस सर। या सो उसमें तो फिर आपको जो है जाके सेलेक्ट करना पड़ता है ना किस चीज के परसेंटेज, तो वहां पे आपने कुछ और किया होगा। दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू हियर। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपको करना बेसिकली ये है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल हु रिस्पोंडेड यस, दैट्स दिस टोटल, आपको इस टोटल को डिवाइड करना है अक्रॉस द 3 नेबरहुड्स। तो उसका क्या तरीका होएगा, यू कैन टू राइट क्लिक देयर, यहाँ पे शो वैल्यूज एज में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ रो टोटल की बजाय आपने जो कॉलम टोटल आ रहा है, कॉलम टोटल का आपने परसेंटेजेस में डिवाइड करना है। सो दिस इज व्हाट you basically wanted to get. This is what was required, कि आपके पास जो out of all the people who responded yes, you have to see कि how they are divided across the 3 neighborhoods. So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, right click पे करके you're going to have to go to show values as and select percentage of column total in that case. ठीक है? Yes. Okay. So let's go to the PDF again and let's look at the next exercise. So एक तो अभी हमने कर लिया कि हम किस तरह से वो percentages calculate कर सकते हैं. Now sometimes what you want to do is sometimes what you want to do is you actually want to add something that's calculated in your data. So आप क्या करते हैं, आप so there are two ways of adding some sort of a calculation. एक तो तरीका है कि आप ओरिजिनल डेटा के अंदर कुछ जो है कैलकुलेशन आपको ऐड करनी है, कुछ एक और एडिशनल कॉलम चाहिए आपको, तो वहां पे ओरिजिनल डेटा के अंदर कर लो. अनदर वे इज कि आप पिवट टेबल के अंदर भी कोई फील्ड्स ऐड कर सकते हैं if you want. So we are on page number 8 right now. Let's look at this. Let's say कि आपको करना ये है कि let's go there. यहाँ पे elect mart में, yeah. So देखिए you've got this data on elect mart sales. Let me increase the size a bit. अच्छा, आपके पास दूसरा डेटा है जो हम उस दिन भी देख रहे थे. Now let's say आपके पास जो है ना ये total spending जो है यहाँ पे जो आ रही है, let's say there is a profit margin, there's a fixed profit margin that Elecmart charges its customers. So profit margin का क्या मतलब होता है कि percentage of profit they're getting from from selling their products. ठीक है? So हर product का for example there could be कि जितनी भी उसकी cost है, they are charging let's say around a 20% profit in that. So in this case, what you can also say is कि जो revenue है, revenue का 20, let's say cost की बजाय revenue का 20% जो है ना वो इनका profit होता है. Let's assume this. ठीक है? So अब आपको करना क्या है कि आपको profits का एक column चाहिए और profits के ऊपर आपने कोई analysis run करना है. ठीक है? So one way is कि आप यहाँ पे इसी data के अंदर आप एक column add करें. ठीक है? आप कॉलम इंसर्ट करें, उसके अंदर आप फॉर्मूलाज रखें प्रॉफिट का कि टोटल स्पेंडिंग मल्टीप्लाइड बाय 20% तो आपको प्रॉफिट मिल जाए और आपके पास यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड हो जाए. बट समटाइम्स होता ये है कि यू डोंट वांट टू चेंज योर ओरिजिनल डेटा, उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते, बिकॉज लेट्स से आप किसी डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं, तो डेटाबेस से जब भी वो दोबारा से डेटा आएगा आपको वो कैलकुलेशन फिर दोबारा करनी पड़ जाएगी.
आपको दोबारा से वो नया कॉलम हर दफा बनाना पड़ेगा. what you instead want to do is कि आपके पास डेटा वही रहे, डेटा में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो आप पिवट टेबल बनाए उसका, उस पिवट टेबल के अंदर आप डायनामिकली एक कैलकुलेशन ऐड करें. So let's see what I'm trying to do here. So let's make a pivot table out of this first. So insert a new pivot table. एक नई वर्कशीट के अंदर एक pivot table बन गया. Now let's say what we want to do is we want to break up by day. Okay. So सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली ब्रेकअप चाहिए आपको टोटल स्पेंडिंग का. ठीक है, you've got something like this. By day आपके पास total spending आ रही है. So we've done something like this before as well when we started working on these exercises. हमने बिल्कुल start में एक table बनाया था that looked something like this. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा sort कर लेते हैं ताकि it looks better. Size भी increase कर दूं. Yeah, so सबसे पहले इसको sort कर लेते हैं. So Tuesday has to go up there. So Monday, Tuesday, Wednesday, then you've got Thursday, Friday and Saturday. So now the data is sorted. यहाँ पे values को भी I can right click, I can go to show values as, I can show them as a percent, show them, sorry, सबसे पहले तो number format इसका change कर लेते हैं. Yeah, number format में जाके it has to be currency, 2 decimal places if you want, you can keep them, or you can make it simpler, easier to read, and you can just remove the decimal places there, because numbers itne large and decimal places really don't matter much. So this is what your total spending for each of these days is. Let's say आप इसको further breakdown करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, by gender कर सकते हैं, by any other variable that we've done before. Now, what you want to do is you want to calculate the profits that the company is making on each of these days. ठीक है, as a total. So आपको जितना भी data है, so यहाँ पे देखते हैं हमारे पास data कितना था. Dates में अगर जाएं, so 2006 में we've got data from March until June. So March से June का तक का data, that's almost 4 months. शायद कुछ dates missing है दरम्यान में, so let's say 3.5 to 4 months का data है. और उनकी आपके पास total आ रही है यहाँ पे कि total sales आपकी इन days में क्या थी. ठीक है, Monday से लेकर Saturday तक, for each day what were your total sales in this period. Now let's say total sales के साथ साथ you want to add something here that's basically the profits that the company is making in on each of these days. ठीक है, so आप एक नया column add करना चाहते हैं that gives you the profits. So one way जो हमें पहले भी पता है, आप simple table जब आपके पास होता है, आप इस तरह की कोई calculation कर सकते हैं. Let's say equal to लगा के this multiplied by 20%. ये table से बाहर हो तो आप ये इस तरह की calculation कर सकते हैं. ठीक है, so equals let's say B4 multiplied by 20%. You can do something like this, right? Again, of course, whenever you update the table in this case, you'll have to redo the calculation. So what we're going to do is we're going to add another column dynamically to this pivot table, जिसका फायदा ये होगा कि उसको फिर हम further analysis कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसको हम as a variable treat कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये अभी existing variables भी हैं. So let's do this. What you can do is you can go to the Analyze tab. ठीक है, आप Analyze tab पे click करेंगे. And then you have this option here that says fields, items, and sets. ठीक है, आप इसके ऊपर click करेंगे. And you have an option here that says calculated field. ठीक है, तो आपको एक calculated field add करनी है in your data. So ये variable को ना field भी कहते हैं. So calculated field का मतलब calculated variable आपको एक और add करना है in your data. So you can click on this. You can click on calculated field. You can name this variable something. So आप क्या name कर सकते हैं? Let's say we call this profit. ठीक है,
अब आपको बताना है कि ये प्रॉफिट आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो फॉर्मूला क्या आएगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे उसने कुछ वैल्यू तो नहीं दी हुई हमें, or is there? Yeah, so we don't have a specific value here, so we can assume something. So let's say we assume that our profits are 20% of our sales. ठीक है? So 20% of sales अगर हमारे profits हैं, how can we calculate the profits? अब यहाँ पे जाके total spending पे click करेंगे पहले फॉर्मूला में जीरो खत्म करें, टोटल स्पेंडिंग इसको डबल क्लिक करें, बस यहाँ पे देखें टोटल स्पेंडिंग आ गया फॉर्मूला के अंदर। so ये वेरिएबल जो भी है, मल्टीप्लाई दिस विद 20%, 20% से मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, it's the same. When you do this, the result that you're going to get is going to be your overall profits. ठीक है, so ये आपने करके you can click on this add button and then आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, देखिए आपका एक और column add हो गया, that's by the name profit. When you click OK here, you have another column here that shows your profits now. ठीक है, आपके देखें ओरिजिनल डेटा के अंदर तो आपके पास कोई प्रॉफिट कॉलम नहीं था, आपने क्या किया, आपने ये कॉलम क्रिएट कर लिया इनसाइड योर पिवट टेबल। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? इसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वेश्चंस? सर ये जो आपने क्रिएट किया सम ऑफ प्रॉफिट का ये जो कॉलम क्रिएट किया सर, ये जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसमें भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा या सिर्फ पिवट टेबल में ही रहेगा? नहीं, ये सिर्फ पिवट टेबल में रहेगा। हमने कहा ना, हम वही तो नहीं चाहते थे कि ओरिजिनल डेटा को हम छेड़ना नहीं चाहते थे, हमें सिर्फ था कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ उसमें हम अपडेट करें। ठीक है, ओरिजिनल डेटा को अपडेट नहीं करना चाहते, बिकॉज ओरिजिनल डेटा तो आपका जहां से भी कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल कहीं से कहीं, जहां किसी डेटाबेस से आ रहा है, किसी लेट्स से वेब लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो वो डेटा के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप जो एनालिसिस रन कर रहे हैं आप वहां पे चेंजेस करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस इनसाइड द पिवट टेबल, कि हमारे अपने एनालिसिस के अंदर तो वो नया वेरिएबल शो हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल डेटा को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। Is this clear? जी सर, थैंक यू। ओके, सो अगर तो आपको है कि डेटा के अंदर डेटा अपडेट नहीं होना और डेटा ऐसे ही रहना है, कोई आप खुद से चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर इफ यू वांट, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डेटा के अंदर प्रॉफिट्स कॉलम ऐड कर लें। ठीक है, सो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, सो ये देखिए राइट साइड पे आपके पास ये प्रॉफिट कॉलम, यहाँ पे भी आपके पास वो पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर ये प्रॉफिट कॉलम भी शो हो गया है। ऑलराइट, सो प्रॉफिट के ऊपर आप ये बाकी भी कोई और भी लेट्स से वो कर सकते हैं, कहीं और पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय जेंडर भी इसको अगर ब्रेकअप में कर दूं, so that's also possible. So for example I could do like this, जेंडर को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, जेंडर को ऊपर कर दें और बाय डे कर लें, something like this. So we can do that. So जिस तरह हम एक नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं in profit in a pivot table, आप प्रॉफिट को भी just like that आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, let's go back to the PDF. अब हम देखते हैं कुछ टाइम सीरीज डेटा को। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। अब इसके अंदर ना एक तो प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, तो जहां पे भी ये कहता है कि आपको कोई चीज किसी न्यू पिवट टेबल के अंदर करनी है ना, सॉरी न्यू पिवट टेबल के अंदर, न्यू एक्सेल फाइल के अंदर, तो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो दैट।
आप नई फाइल बनाएं उस pivot table को बनाने के लिए, otherwise you will to run into some problems, and we'll discuss what exactly those problems are going to be. जब भी आपको हम ये ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगी ये क्या इशू आता है उसमें. अच्छा, let's try this. This is also something that's very useful whenever you have a date column in your data. ठीक है, जब आपके पास dates होती है ना, you can run some really interesting analyses. और इस डेटा को हम बेसिकली टाइम सीरीज डेटा कहते हैं. जब आपके पास डेट होती है, डेट वाइज जब आपका जो है डेटा वेरी कर होता है, मतलब डेट वाइज सॉर्टेड होता है कि अच्छा इस दिन को ये सेल्स थी, नेक्स्ट डे ये सेल्स थी, एंड सो ऑन. सो वी कैन लुक एट द डेटा. इलेक्टमार्ट भी हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है. चपली कबाब टाइम सीरीज नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ सर्वे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेट वाइज कोई वेरिएशन नहीं है. KKBL is also a time series data because we have these values changing by date here. Okay, so let's try this. So time series data के ऊपर आपने अब कुछ analysis करने हैं. So let's say what exactly we can do here. ठीक है. अच्छा, जो डेट होती है ना, आप देखें, आप किसी भी लेट्स से यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, आप कोई चीज खरीदते हैं, जब आपके पास फाइनल एंड के ऊपर आपको एक बिल मिलता है, उसके ऊपर डेट आ रही होती है. Now that date is actually a combination of many things. So date का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि मंथ, उसमें सब कुछ लिखा होता है, डे, मंथ, ईयर, and then you've got time in that at that same place as well. आपके पास टाइम में भी फिर वो आ रहा होगा, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, वो सब आपके पास एक ही जो है जगह के ऊपर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है. सो अ डेट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फील्ड्स. ठीक है, आपने उनको एक वेरिएबल के अंदर कंबाइन किया होता है. सो यू हैव ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड. तो ये सारी चीजें आपने एक ही वेरिएबल के अंदर ऐड की होती है. ठीक है. सो एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फीचर्स हैं डेट को इफेक्टिवली यूज करने के लिए. सो वी टू मेक यूज ऑफ देम, make use of those features here to run some analysis. Acha. So let's try this. Let's create a new pivot table for the KKBL data having case unit sales in the values field. ठीक है. So हम कोई भी टेबल बनाते हैं having unit sales in the values field, और जो रोज हैं उसके अंदर लेट्स से अभी हम डेट ऐड कर देते हैं. ठीक है, डेट ऐड कर देते हैं. या सो लेट्स ट्राई दैट. So KKBL data, इसको हम क्या करेंगे? We're going to select this data first, and we want to create a pivot table out of it. So insert pivot table. It goes to a new worksheet. ठीक है. Let's try doing this. So हमें क्या चाहिए? We want date and rows. So you can see rows के अंदर ये date आ रही है. Every day is coming exactly once. And then you can have daily sales here. तो आपने case unit sales को यहाँ पे डाल दिया sales के अंदर. We can improve the formatting a bit. The way to do that is you right click here, go to number format. It's unit sales. तो ये currency तो नहीं है. You're going to keep it as a number. लेकिन आप क्या करेंगे? आप 1000 separator ऐड कर देंगे यहाँ. ठीक है, to make it look better. And it's unit sales, तो decimal में तो हो नहीं सकता, तो decimal places भी आप 0 कर दें यहाँ पे. 1000 separator and 0 decimal places. When you click OK here, it's much more readable now. ठीक है, जब commas आ जाते हैं साथ, तो it looks better and it's also easier to read. Okay,
So this is what you have right now. ठीक है, so ये आपके पास table आ गया. अच्छा मुझे बताएं, which version of Excel are both of you using? Okay, so all right, Shagufta is using 2016, Shahzad is using 2013. Shagufta, आप मुझे बताएं कि can you see anything more here in the fields column जो मुझे नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको आपके पास कुछ और भी आ रही है fields के अंदर values? किसी यही आ रही हैं सिर्फ जो मेरे पास आ रही हैं? हाँ सर, यही वाली वैल्यूज आ रही हैं. अच्छा, sometimes what happens is कि आपके पास आपको ना ये डेट को क्वार्टर्स में भी डिवाइड कर देता है, और आपके पास ईयर्स में भी डेट कॉलम के ना मल्टीपल आपको वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बना देता है, क्वार्टर्स के वेरिएबल बना देता है, ईयर के वेरिएबल बना देता है. बट खैर अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो दैट्स टोटली फाइन. अच्छा, टाइम सीरीज डेटा के अंदर ना जब इसको विजुलाइज करते हैं, लेट्स ट्राई टू विजुलाइज दिस एक्चुअली. सो हम यहाँ पे देखें, इसको एनालाइज में जाके ना हम एक चार्ट बनाते हैं, उसका पिवट चार्ट. डेट जब आपके पास होती है ना किसी भी डेटा के अंदर, you prefer to make a line chart from that. ये देखें कॉलम चार्ट के जो इतना रीडेबल भी नहीं है. डेट के केस में you generally make a line chart like this. ठीक है, so now this makes some sense कि आपका ये आपको शो कर रहा है कि डेली आपकी सेल्स किस तरह से वेरी कर रही हैं. ठीक है, across the 3.5 to 4 months that you have available there. No, it's actually 3 years data. So 3 years, across 3 years आपकी sales किस तरह से vary कर रही है. Now of course 3 years के अंदर अगर ये पूरे 3 years हैं, तो आपके पास all 1000 से ज्यादा days होंगे एक तरह से. ठीक है, 1000 से ज्यादा days होने का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पे rows के अंदर you're going to have 1000 points here, 1000 आपके पास आप वैल्यूज शो हो रही होंगी रोज के अंदर यहाँ पे. सो दैट्स अ लॉट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, सो दिस इज वन वे कि आप इसको डेली ट्रेंड शो कर रहे हैं. नाउ व्हाट यू कैन आल्सो डू यूजिंग द डेट कॉलम इज कि आप इसको ना डिवाइड कर सकते हैं into any intervals that you want. So for example, you can say instead of daily sales I want to look at quarterly sales. ठीक है, quarterly sales के साथ साथ you could also look at, for example, you could look at weekly sales, right? So something like that. So all of that is possible using a date variable. So let's see how we can do that. So आपके पास date जब होगी एक as a variable, आप क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती है यहाँ पे ग्रुप की. ठीक है, ग्रुप की ऑप्शन आ रही होती है. When you click on group here, डेट के केस में ना it's going to give you these options. So seconds, minutes, hours, days, months, quarters, years. So automatically it's going to give you these options here. तो आप क्या कर सकते हैं, you can make use of this, and let's say आप इसको डेली सेल्स की बजाय आप क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड देखना चाहते हैं. सो लाइक यू हैव हियर, यहाँ पे देखें क्वार्टरली और उसके अंदर फिर मंथली ट्रेंड है. ठीक है, और हर ईयर को जो है वो सेपरेटली शो किया हुआ है इन डिफरेंट कलर्स. ठीक है, so let's try and see, let's try to modify this first and see कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. So हमें क्या दो चीजें चाहिए, we want quarters and months for now, right? So quarters और months चाहिए, तो months तो already यहाँ पे selected है, आप quarters को भी select कर लें. ठीक है, we click on both of them. So now this date is going to be grouped into quarters and months. So let's try that. We click on OK here. We get something like this. ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, and then we've got every month there as well. ठीक है, so we've got
a chart like सर this. Yes. सर आपने पूछा था ना डेट क्वार्टर वाइज शो हो रही है कि नहीं पिवट चार्ट फील्ड्स में। सर वहां से भी हम फिल्टर्स यूज करके ना सर मैंने चेक किया अभी डेट को क्लिक करके हम उसके थ्रू भी क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे में शो हो रहा है सर। Yes, so you are getting that. So 2016 version onward, you've got that functionality as well कि आपको already ये groupings available होती हैं, उसने वो की होती हैं groupings यस आपको, सर। तो आप वो filters में उस यस तरह से कर सर। सकते हैं। So यहाँ पे यस सर। सॉरी आप शगुफ्ता दोबारा बताएं आप क्या कह रही थी? सर पिवटेबल फील्ड्स है ना सर उस पे आप डेट पर जाएं यहाँ पे और यस सर ये एरो को क्लिक करें सर। जी सर इसे क्लिक करें सर डेट फिल्टर्स में। जी सर इसको क्लिक करें और सर ये ऑल डेट पीरियड जो है ना इसमें जाएं सर यहाँ पे। जी सर वो ये आ गई शो है। फिल्टर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग ये तो हमने ग्रुपिंग की जी है ना, सर। वो तो फिल्टर आप जी अप्लाई सर। करेंगे आपका डेटा तो फिर भी डेली फॉर्म में रहेगा ना, तो आपके पास डेली सेल्स ही आ रही होंगी। हमें उसको ग्रुप करना है, जी हमें डेली सर। सेल्स नहीं चाहिए, वी वांट टू लुक एट क्वार्टरली सेल्स एंड मंथली सेल्स। ओके सर। आप फिल्टर भी कर देंगे उसको किसी क्वार्टर के अंदर, तो वो उस क्वार्टर के अंदर आपको वो तो डेली सेल्स ही दिखा रहा होगा। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज ग्रुपिंग द डेटा, ताकि हमारे पास वो 1000 से ज्यादा वैल्यूज की बजाय वी गॉट अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हियर, दैट्स 12 वैल्यूज टू इन टोटल हियर। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम इसको अभी तो ये अभी इसमें देखें, आपके पास 3 years का डेटा था, राइट? तो 3 years का डेटा का क्या मतलब है, यहाँ पे जो जनवरी की सेल्स है ना, इसमें जनवरी 2010 की भी आ रही हैं, 2011 की भी आ रही हैं, 2012 की भी आ रही हैं, so तीनों सालों की इकट्ठी आ रही है। So it might not be very sensible to do this. ठीक है। So अगर आपने लेट्स से 3 सालों का इकट्ठा ट्रेंड देखना है, one way to do that is कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और लेट्स गो टू ग्रुप अगेन, आप यहाँ पे years भी सेलेक्ट कर लें साथ। So when you select years as well, अब ये देखिए आपका ट्रेंड पूरा शो हो रहा है। Starting from 2010 you can see के किस तरह से आपकी सेल्स वेरी कर रही हैं across every month. So 2010 से start होके 11, 12 and then you've got quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 and so on. और उसके अंदर फिर आपकी monthly division भी आ रही है। ठीक है। So this is you can look at the trend, at the overall trend and the data like this. You can see कि आपकी 2010 to 2012 tak your sales increased slightly, but then there is a more significant increase from 2011 to 12. यहाँ पे ये increase as compared to earlier ज़्यादा है। That's the first thing, that your sales are increasing, and the second thing is कि आप देखें आपके data का जो pattern है that looks fairly similar across all 3 years. तो आपकी सीजनैलिटी देखें वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर जुलाई में जाके आपका थोड़ा सा डिप आ रहा है तीनों सालों में, एंड ओवरऑल your sales in the winters are lower across 3 years, और summers में overall sales जो हैं वो ज्यादा होती हैं। So there's a similar trend that is being followed every single year. ठीक है। इसका एक तो ये तरीका है कि आप इसको ईयर का पूरा ये इस तरह से एक आप सिंगल ग्राफ में ये शो कर दें। ठीक है। There's also another way to look at it, and that is कि आप यहाँ पे क्या करें, इसको आप ग्रुप में जाएं दोबारा, इसमें से अगर years को निकाल देते हैं यहाँ पे you've got only quarters, you've got a year variable there as well। आपके पास pivot table fields के अंदर आपके पास एक और variable आ रहा था जो already data के अंदर था। देखें केकेबल डेटा के अंदर आपके पास year variable already available था एक। What you can do is you can put that year variable in columns. So remember जब आप columns में कोई चीज डालते हैं तो graph के अंदर क्या होता था, that thing is going to be shown in different colors। ठीक है। So आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से उठाएंगे and you're going to put that in columns here। Sorry, territory को डाल दिया मैंने गलती से।
year को उठा के I can put in columns here. So now you see something that looks a bit similar to what was there in that chart that we saw in the PDF file. अच्छा यहाँ पे भी मेरे पास कलर्स का वो शो नहीं हो रहा है, उनको मैंने उसको डिलीट कर दिया था पहले इस चार्ट के अंदर से. If I want that back, I can go to this design tab at the top. आपने कुछ कोई भी चीज ऐड करनी हो ना या निकालनी हो, आप यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट की ऑप्शन आ रही होती है. डिलीट करना तो वो तो काफी सिंपल है, आप उस पर क्लिक करते हैं, उसको डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, आपको वो चीज डिलीट हो जाती है. बट कोई चीज ऐड करनी हो ना, डिजाइन टैब के अंदर जाके you've got this option add chart element, so you can add anything that you want there. So axis आपने ऐड करने हैं, horizontal axis, primary या vertical axis already आपके पास added है अभी, तो वो कर सकते हैं. एक्सेस के टाइटल्स ऐड कर सकते हैं. सो अभी आपके पास टाइटल्स यहाँ पे ऊपर लिखे हैं. फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है वो केस यूनिट सेल्स है, यहाँ पे आपके पास क्वार्टर्स और डेट शो हो रहे हैं. आप ये भी कर सकते हैं जिस तरह कि आप यहाँ पे नीचे इसके, अगर आपको वो बेहतर लगता है, दैट्स जनरली बेटर फॉर प्रेजेंटेशन, कि आप यहाँ पे लिखते हैं, इसके साइड पे शो कर दें यूनिट सेल्स इसके साथ नंबर्स के साथ. फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस. सो एक्सेस टाइटल आप ऐड कर दें, प्राइमरी वर्टिकल, यहाँ पे यू कुड से दीज आर योर यूनिट सेल्स. ठीक है, आप ये एक्सेस टाइटल्स ऐड कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन ऐड अ चार्ट टाइटल at the top like this. चार्ट का आप टाइटल दे सकते हैं कोई. सो यहाँ पे you can, for example, name it as comparison of sales trends across the years. You've got 3 years available, तो आपने वो चार्ट टाइटल भी ऐड कर दिया. Similarly, you've got some other options है. एक डेटा टेबल होता है. डेटा टेबल में क्या होता है, आप ग्राफ के साथ ही what you can do is you can add exact values as well, something like this. So आपको अगर कहीं पे present करना है, you don't need to add both the table separately and the graph separately. आप ग्राफ के साथ ही डेटा टेबल एक incorporate कर सकते हैं जो आपको exact values भी बता देता है और ऊपर आपके साथ ग्राफ आ रहा होता है. ठीक है. So similarly you can try experimenting with the different options that are available. इसी तरह layout में भी आप try कर सकते हैं. Different options available हैं. You might find some other charts that look a bit better. So something like this, for example. Dark background generally जो है वो recommend नहीं होता. अब white background ही रखते हैं, light backgrounds generally. लेकिन अभी बाकी options explore कर सकते हैं that can, you know, make your chart look a bit better. So something like this, for example. ठीक है. ये आपका टेबल ऐड हो गया. इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन होती है लेजेंड की. ठीक है, अभी तो मैंने डेटा टेबल के अंदर ही वो ऐड कर दिया है. यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर ही फॉर एग्जांपल आ रहा है लेजेंड, जो आपके कलर्स, डिफरेंट कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट लेट्स से इफ आई डिड नॉट हैव द टेबल, लेट्स टेबल को अगर मैं रिमूव कर दूं and I still wanted to show what each of these different colors represents, because अभी तो मुझे इस ग्राफ से कुछ पता नहीं चल रहा कि ये different colors क्या represent कर रहे हैं. So I can go to add chart element and I can add a legend there. Legend आपको बताता है कि वो colors क्या represent कर रहे हैं. So you have the option of putting it on any side of the chart. So generally जो है आप right side पे डालते हैं, bottom पे डालते हैं. So you can choose any of them. You can put it on bottom, you can put it on the right. अब right पे यहाँ पे डालेंगे तो it shows you कि which color represents which year. तो अब देखें overall trend में 2010 is had the lowest sales, and then it increased slightly in 2011, and then there was a significant increase in 2012. So comparison is a lot easier जब आप इसको
क्रॉस टैबुलेशन करते हैं इस तरह से, आपको ईयर यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आता है, कंपैरिजन जो है इट्स relatively easier in this case अगर आपने across years comparison करना. ठीक है, any questions on this? Does this make sense? I hope it's very interesting as well. Okay. So ये आपने जब आपके पास जब भी इस तरह से time series data होता है ना, you can make some very useful line charts here and you know understand the trends that you have in the data. और आप इस तरह से groupings भी कर सकते हैं of that date variable that you have there. Okay. इसी तरह से it's not necessary कि आपके पास सिर्फ यही options है, आप इसको weekly भी कर सकते हैं. ठीक है, let's say आपने quarter की बजाय what you wanted to do was आप weekly trend देखना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे जाएं, when you click here, let me actually keep this chart like this ताकि इसमें कोई updates ना हो. I'm copying the data and तब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, let me actually show you what happens ताकि आपको उसका अंदाजा भी हो. तो मैं कॉपी करता हूँ डेटा को, नीचे पेस्ट कर देता हूँ. तो now let's say if I want to change this grouping, इसको मैं ग्रुप पे जाता हूँ दोबारा. अब मुझे करना ये है कि I want to have a weekly group. ठीक है, मुझे weekly trends चाहिए instead of monthly or quarterly trends. I want weekly trends. The problem is I don't have an option for selecting weeks here. ठीक है, वो तो option ही नहीं आ रही है. बस month के बाद मेरे पास days आ रहा है. So I cannot do weekly directly. ठीक है, इसमें क्या करना होगा आपको, आपको ये जो ये ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे, इन सबको आपने अनसेलेक्ट कर देना है. ठीक है, आपने क्वार्टर्स को भी अनसेलेक्ट कर देना है, मंथ्स को भी अनसेलेक्ट कर देना है, आपने सिर्फ क्या करना है, डेज को सेलेक्ट करना है. ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 1 आ रहा होगा. ठीक है, जो आपका ओरिजिनल डेटा था कि वो डेली आपको सेल्स शो कर रहा था. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली राइट डाउन एनी नंबर ऑफ डेज हियर. तो आप यहाँ पे 1 की बजाय फॉर एग्जांपल अगर आप 7 कर देंगे तो ये 7 डेज का एक ग्रुप बना देगा. सो विच इज बेसिकली सपोज्ड टू बी अ वीक. ठीक है, सो आप इसको यूज करके आप डेली ग्रुपिंग की बजाय आप इसको वीकली ग्रुपिंग में भी चेंज कर सकते हैं. So when you click OK here, you get something like this. ठीक है, this is what you're getting. बस वीकली शो हो गया कि वीकली आपकी 2010, 11 and 12 में नहीं, यहाँ पे तो 11 और 12 की नहीं आ रही बिकॉज 11, 12 जो है वो नीचे जाके आएगा कहीं पे. 11 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 11 की सेल्स आ रही है, उसके बाद 12 जो है उससे नीचे जाके स्टार्ट हो रहा है. अभी इसको ये निकाल ही देते हैं, लेट्स से ईयर को. लेट्स जस्ट लुक एट दिस. ये आपके पास देखें वीकली ट्रेंड आ गया है, वीकली ट्रेंड ऑफ केस यूनिट सेल्स के वीकली किस तरह से वेरी कर रहे हैं. अगेन यू कैन मेक अ चार्ट हियर इफ यू वांट, बट दिस इज व्हाट इज आल्सो पॉसिबल कि आप बाय वीक उसको बना लें. ठीक है, अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज अब मैंने यहाँ पे जब वीकली ग्रुपिंग की है, इफ आई गो बैक अप देयर, मेरा जो पिछला टेबल था ना वो भी सारा इफेक्ट हो गया.
देखें सारा कुछ ये अजीब सा हो गया, it is changed to weekly as well now. So इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक फाइल के अंदर ना आप एक वेरिएबल की मल्टीपल ग्रुपिंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक फाइल के अंदर एक वेरिएबल की मल्टीपल ग्रुपिंग्स नहीं कर सकते, यानी कि एक टेबल में आप मंथ कर लें और दूसरी टेबल में आप वीक कर लें, दैट्स नॉट जनरली पॉसिबल, ठीक है। अब इसका एक वर्क अराउंड होता है, वर्क अराउंड ये होता है कि द फर्स्ट वर्क अराउंड इज दैट यू, अगर आपको इस तरह की ग्रुपिंग करनी है, जो किसी एक टेबल के अंदर कोई और ग्रुपिंग करनी है, दूसरे टेबल के अंदर कोई और ग्रुपिंग करनी है, you keep those tables or charts on separate workbooks, separate files के अंदर आप रखें, ठीक है। आप एक और फाइल बनाएं, उसके अंदर आप दूसरा पिवट टेबल ले जाएं और वहां पे जाके आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर कोई और पिवट टेबल होगा, सेम वेरिएबल की कोई और ग्रुपिंग नहीं हो सकती, वरना आपके सारे पिवट टेबल्स जो है उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। So what I'm going to do now is I'm going to press Control Z a few times now ताकि हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। So this is what we had earlier, ठीक है। So I'm going to keep it like this and I'm not going to change it in any way now. अच्छा, इसका एक और भी वर्क अराउंड होता है कि आप नई फाइल की बजाय इसी फाइल के अंदर रख लें। Let me just try if I remember that correctly. उसका तरीका क्या होता है, आप एक और पिवट टेबल बनाए, उसको कॉपी नहीं कर सकते, आपने जाना है वापस डेटा के अंदर, आपने दोबारा से एक पिवट टेबल बनाना है, उसके अंदर फिर एक ऑप्शन होती है, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट। So you select the data again, you click on insert, insert में जाके you click on pivot table, ठीक है। अच्छा, pivot table में जाके what you can do here is you actually have an option to, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है, let me try if I can find another thing here. No, अच्छा, let me actually try and search for that option ताकि हमें नई फाइल ना ही क्रिएट करनी पड़े। ऑप्शंस में जाके एडवांस्ड, कस्टमाइज रिबन, अच्छा, प्लीज फॉलो what I'm doing here. Go to the file tab, file tab में जाके go to options, ठीक है। फाइल में जाके go to options. Now I'm going to have to try and search for that. File options, इसके अंदर you can select customize ribbon, ठीक है। customize ribbon में चले जाएं, अच्छा इसमें कहाँ देख सकते हैं, yes. So आपने क्या करना है, customize ribbon में जाके you're going to go to, you're going to go, click on this drop down, drop down पे आप क्या करेंगे, आपने all commands select कर लेनी है, ठीक है। all commands select करके now you're going to go, अब इसमें बहुत सारी options आ रही होंगी आपके पास, आप E पे E प्रेस करें, E for pivot table, उस एरिया में जाके ना आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी कहीं पे, that's basically yeah. So you've got pivot table and pivot chart wizard here. ये आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी, pivot table and pivot chart wizard. ये मिल गया आप दोनों को? Were you able to get to this pivot table and pivot chart wizard?
Okay, so you're going to select that और आप इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे राइट साइड। अच्छा, need to be added to custom groups। अच्छा वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। so okay, यहाँ पे हम किसी टैब के अंदर डाल देते हैं। so let's say होम टैब के अंदर, पता नहीं आएगा कि नहीं। let me just try if I can create a new group there। अच्छा नहीं, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं। yeah, so home tab के अंदर I've created this new group और वो ग्रुप पे फिर select करके I can select this pivot table and pivot chart and add there to the right। ठीक है, मैंने क्या किया, होम पे क्लिक करके I have clicked on this new group button। new group पे जाके फिर I can add pivot table and pivot chart wizard there। so once I've done that I can click OK। देखिए होम टैब के अंदर ना आपके पास राइट साइड पे एक ऑप्शन आ जाएगी pivot table and pivot chart wizard की। ठीक है, so now we're going to be using that। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में आपने क्या करना है, what is the data that you want to analyze। so the data that you have is in this table। तो आप इसी को सिलेक्ट करना, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसको आप रहने दें वैसे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाके आप ये डेटा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसमें ये ऑलरेडी, अगर आपने वो पहले से सिलेक्ट किया हुआ था तो ऑलरेडी वहां पर सिलेक्टेड होएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसके बाद ना आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद पढ़ लेते हैं। सो इट सेज your new report will use less memory if you base it on your existing report data। so basically इसका मतलब ये है, ये आपको कह रहा है कि आपने एक और पिवट टेबल पहले क्रिएट किया हुआ था। अगर आप इस जो नया पिवट टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं इसको आप पिछले पिवट टेबल के साथ अगर आप लिंक कर देना, it's going to save your memory because every pivot table instance that you create by default ये क्या होता था, वो सेम एक डेटा को यूज करता है बैकग्राउंड पे। उसका फायदा ये होता है कि इट इंक्रीजेस योर मेमोरी, इट बेसिकली इंक्रीजेस योर स्पीड और आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। जो भी जितने पिवट टेबल्स बनाते हैं उसके बैकग्राउंड पे वो सेम डेटा को यूज कर रहा होता है। ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है फिर कि जब आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं एक पिवट टेबल के अंदर तो दैट ऑटोमेटिकली अपडेट्स इन द अदर पिवट टेबल एज वेल एंड दैट्स व्हाट यू डू नॉट वांट। तो इस केस के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, यू इंस्टेड वांट कि हर पिवट टेबल जो आप क्रिएट करें वो एक नए, ये एक्सेल उसकी एक नई कॉपी बनाए अपने बैकग्राउंड के अंदर ताकि वो आपस में लिंक्ड ना रहे और आपकी ग्रुपिंग में इश्यू नहीं आए। ठीक है, तो अभी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ना लिंक कर दें अपनी प्रीवियस रिपोर्ट के साथ ताकि आपकी मेमोरी यूजेज जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाए। बिकॉज आपके सेम सोर्स डेटा से दूसरा टेबल भी बना था तो वगैरह आप उसी के साथ इसको लिंक कर दें। However, you do not want to do that। So it says if you click no, the two reports will be separate and that's what you want। आपने दोनों रिपोर्ट्स को अलग रखना है। So you click on no here। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन आ रही है न्यू वर्कशीट में करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, आप न्यू वर्कशीट में बना दें। So now this pivot table is separate from your other pivot tables। तो अगर आप यहाँ पे कोई नई ग्रुपिंग करेंगे ना, it's not going to affect your previous pivot table। So अगर आपने same file के अंदर करना है, this is the way to do that। ठीक है, so now what you do is you select date from there। date को उठा के आपने rows में डाल दिया। then you've got case unit sales you've got in columns and in sorry values। right click करके we can correct the number format first।
ठीक है, number format, currency, sorry, number, 1000 separator. It looks like this. You've got weekly, you've got daily sales here. आप उस पर राइट क्लिक करें. आपको क्या करना था, आपको वीकली ग्रुपिंग करनी थी. ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ओनली सेलेक्ट डेज में जाके सेलेक्ट 7 एज द नंबर ऑफ डेज, तो आपकी वीकली ग्रुपिंग कर देगा. इसको ओके करेंगे, ये आपके उसने वीकली ग्रुपिंग कर दिया. ठीक है, now you can create a chart if you want, or you can keep it like this. That's on you. So अगर आप चार्ट बनाएंगे, it's going to look something like this now. ठीक है, आपकी वीकली सेल्स ट्रेंड शो कर रहा है across the 3 years that you have in the data. ठीक है, अब आप देखें पिछले टेबल पे जाके, वो आपके उसमें कोई मसला भी नहीं हुआ, because the next table was not linked to this. तो आपने एक दफा इसको क्वार्टरली और मंथली ग्रुपिंग कर ली, दूसरी दफा यहाँ पे आपने वीकली ग्रुपिंग कर ली. Is this clear? Any issues here? Anyone? Okay, great. अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे तो सो आप यहाँ पे फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रुपिंग के अंदर ही देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आप यहाँ पे ऊपर बाय डिफॉल्ट तो ये सारे डेटा को कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम 2010 टू 2013 का स्टार्ट, सो दैट्स बेसिकली 2012 का एंड. तो ये सारे डेज का डेटा ले रहे हैं. आप यहाँ पे इसको स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम इसको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, आप डेट को यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं इफ यू वांट. सो दैट इज इन फैक्ट पॉसिबल एज वेल. ठीक है, आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट चेंज भी कर सकते हैं. आपको तीनों सालों का नहीं चाहिए, you only need it for let's say 2010 to 2011 का start, 1st January 2010 to 1st January 2011. You can also do that like this. उसमें होगा क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये इस वजह से हो रहा है कि ये आपको वीकली सारी शो हो रही है like this for 2010, लेकिन एंड पे आपकी एक वैल्यू आ गई है that says greater than 1st January 2011. तो 2011 1st January के बाद जो भी सारी वैल्यूज है उसको एक ही सेल में यहाँ पे कंबाइन कर दिया. तो यू कैन टेक दिस आउट, वरना आपको वो ट्रेंड को समझ नहीं आएगा. ये वैल्यू इतनी बड़ी है, इसके रिलेटिव पे बाकी वैल्यूज इतनी छोटी हो जाती हैं कि आपको नजर भी नहीं आती है. आप क्या करेंगे, आप फिल्टर्स में जाके उसको ये लेस देन वाले को भी और ग्रेटर देन वाले को भी, इन दोनों को आप रिमूव कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे. नाउ योर वीकली ट्रेंड इज गोइंग टू मेक सम सेंस. तो आपने सिर्फ 2010 का बना लिया फॉर एग्जांपल. ठीक है, 2010 के ऊपर फिल्टर लगा के आपने सिर्फ एक साल का कर लिया लाइक दिस. ये आपको 2010 का ट्रेंड शो कर रहा है, वीकली ट्रेंड. सो यू कैन आल्सो डू दिस. ठीक है, so I hope it makes sense. I know it's not very easy to grasp the very first time unless you are doing it step by step with me. So what I will do now is I'm going to stop now because the time is up. We still have a few exercises to cover. We'll do that next time. But we're going to stop here for today. And what I'll ask you to do is कि आप ये जो सारी हमने यहाँ पे ग्राफ्स बनाए हैं, सारी जो पिवट टेबल्स बनाए हैं,
based on the exercises that we had in the PDF. You attempt all of this on your own again now. आप ये सब चीजें दोबारा से खुद भी attempt करने की कोशिश करें and see how far you can go. I'll be sharing this file with you as well after this class, and I'll try to upload videos and soon as well. So go through the videos again, go through the file again, and see if you can replicate what we've done in class. ठीक है, उसमें फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ पे confusion आ रही है, कहाँ पे issues आ रहे हैं, and we can discuss those in the next class. So next weekend, most likely, Saturday is going to be our last session. हम ये exercise हमने ये complete करनी है, and then we just need to discuss one more thing, one or two more things, जो conditional formatting से related है या फिर data validation से related है. We'll be able to finish them on Saturday, and that will be our last class. ठीक है? So that's all we're left with as far as the course contents are concerned. So आपके कोई questions है तो you are welcome to ask them right now, or अगर आप खुद से पहले इसको attempt करना चाहते हैं, you can attempt them by yourself as well, और आप बाद में भी discuss कर सकते हैं. Just give me a couple of minutes. I'll be back if you have any questions. ठीक है? अच्छा जी बताएं, if you have any questions we can discuss them अभी. सर क्वेश्चंस तो अभी जब ट्राई करेंगे तब होंगे. तो सर मैंने पूछना था सर, नेक्स्ट वीक तो अशूरा है, तो हमारी क्लास होगी सर सैटरडे संडे? I was not sure about this. क्या dates आ रही हैं? सर इट्स मैं आपको बताती हूँ सर. आई थिंक सर इट्स 29 and 30. 29th and 30th? यस सर, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे. Okay, अच्छा. So I'm not really sure about it. What I can do is I'll post on the group, and if anybody would not be able to make it, then we'll have to reschedule. या फिर ये भी कर सकते हैं, if somebody is not able to make it, अभी वैसे भी attendance is so low. अच्छा, you can tell me whether both of you are going to be available? यस सर, आई एम अवेलेबल, मुझे कोई मसला नहीं है. Shahzad? Shahzad, are you there? Yes, sir, I will be available, sir, next Saturday. Okay, so I think we can go ahead with the class, because अगर ये वाला weekend भी हम skip करते हैं तो it might make it a bit more difficult for us to leave one class for even the next weekend after that. So we'll try to finish next weekend. If somebody cannot make it, they can always watch the recording as well. In any case, attendance जो है इतनी low है, तो recordings के through तो आप कर ही सकते हैं. ठीक है, so we're going to have a last class on Saturday most likely. अगर Saturday को जो है नहीं हुई तो Sunday को. ठीक है, so we'll have one of those 2 days same time. ठीक है, वो हम decide कर लेंगे उस पर. Okay, any other questions that you have? Okay, so please try this on your own now, ताकि if you have any problems, if you encounter any problems, वो आप उनको discuss कर सकें बाद में. ठीक है, so we'll stop here.
and we'll meet next weekend then inshallah. Okay, Allah Hafiz.